Good evening. Welcome everyone on the YouTube live session. Today we will be discussing on breathing. What is the ideal or natural accepted breathing secret? Breathing is a very simple, needs no special training. It's been practiced from the birth till the last breath of the person he is taking in the world. So for this, no special training or teaching is required. Yes, but the important point, what we are missing, what we find which need to be addressed, how we need to get, and what is that secret in order to achieve a healthy, disease free, and long life through that secret of breathing which we have been ignoring knowingly, unknowingly. Either we are aware of it, we are just trying to switch over to the shortest methods, different options in order to bring you back on the normal, natural process of breathing, what we should be practicing as a daily routine. The breathing is a natural process wherein we inhale oxygen and exhale carbon dioxide. Now, inhale, whenever we inhale through nose. That is ideally accepted. So whenever we inhale through nose, we inhale oxygen. Say, for example, hypothetical figure, suppose 20% oxygen we inhale through nose. Once it's oxygen it enters in the system, the exchange of gases takes place inside the body in lungs. The oxygen gets absorbed by the lungs. In turn, the carbon dioxide, the waste or the toxins that is being taken by the breath, and it is exhaled out from our nose again. So that exhale process, it consists majorly of carbon dioxide, and that too 16%. So the 20% we inhaled oxygen, and exhaling we gave out 16% of carbon dioxide.
So 4% of oxygenated air that we inhale, that is retained and utilized inside the system. So the requirement of the body of 20% and the removal of the waste from the body is 16%. That indicates the continuous flow of more quantity of oxygen is required in order to achieve a good health. And the waste removal from the body is 16% per breath. So सिंपल भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें, बहुत सरल तरीके से, हमने 20% ऑक्सीजन लिया और मात्र 16% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ा एक्सेल करके। तो जो 4% एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हमारे बॉडी में रह गया, वो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन अच्छी वायु के रूप में हमारे शरीर की ज़रूरत के लिए प्रयोग में आता है। जो 16% कार्बन डाइऑक्साइड, पूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो एयर हमने बाहर एक्सेल किया, उसमें सारी इम्प्यूरिटीज, सारे वेस्ट, सारे टॉक्सिन्स जो हमारा शरीर एक गहरी सांस लेने के बाद छोड़ सकता है, वो हमने शरीर से निकाल दिया। इस नेचुरल प्रोसेस, ब्रीथिंग के नेचुरल प्रोसेस से हर मिनट में हम 16% कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से निकालते हैं। तो आप इसकी इम्पोर्टेंस को अब आप समझ सकते हैं कि हर एक ब्रीथ आपके शरीर के लिए, हर एक गहरी सांस आपके शरीर के लिए कितनी स्वास्थ्यवर्धक हो सकती है, अगर गहराई और उस सीक्रेट तरीके को भी ध्यान में रख के ली जाए, ताकि हम जल्दी बीमार ना पड़े। आज हम उसी ब्रीथिंग सीक्रेट के बारे में बात करेंगे। हमने ब्रीथिंग प्रक्रिया को, प्रोसेस को समझने की कोशिश की। अब ये ब्रीथिंग प्रोसेस जब से बच्चा जन्म लेता है और वो आखिरी सांस जब तक वो इस पृथ्वी पर है, तब तक ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। चाहे आप खाना खाते हैं, चाहे आप खेलते हैं, चाहे आप एक्सरसाइज करते हैं, चाहे आप सोते हैं, आप कोई भी क्रिया करें, आपकी बॉडी में ब्रीथिंग प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है। वो किसी भी चीज़ का डिपेंडेंट और किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो हमको इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वो कौन-सी टेक्नीक है, कौन-सा तरीका है, जिससे हम अपनी ब्रीथिंग को और अच्छा, स्वास्थ्यदायक और लाइफ को खुशहाल बनाने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हेल्दी इंडिविजुअल के लिए नॉर्मल, आइडियल, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड ब्रीथिंग रेट क्या है? एडल्ट के लिए 18 से 30 ब्रीथ पर मिनट हेल्दी माना जाता है। न्यूबॉर्न बेबीज के लिए 44 ब्रीथ पर मिनट हेल्दी होता है। इन्फेंट चाइल्ड, छोटी उम्र के बच्चे, उनके में 24 से 40 ब्रीथ पर मिनट नॉर्मल होता है। और चिल्ड्रन जो 1 से 7 साल के बच्चे होते हैं, उनके केस में 18 से 30 ब्रीथ पर मिनट हेल्दी माना जाता है। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड और आइडियल लेवल्स हैं, जिसको हम एक हेल्दी ब्रीथिंग पैरामीटर्स को चेक करने के लिए यूज करते हैं। नाउ अब हमको ये समझना है, अब ये समझने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर सांस, ब्रीथिंग कितने टाइप्स की होती है। ब्रीथिंग
हम जैसे आम तौर पे हम जानते हैं सांस लेना और सांस छोड़ना, ये ब्रीथिंग है। थोड़ा इसको हम हल्का सा डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। वो आपको ये जानने में बहुत सहायक होगा कि आखिर वो ब्रीथिंग सीक्रेट क्या है। तो 4 तरह की ब्रीथिंग्स क्या होती हैं। नंबर 1 यूपनिया, और जिसको हम सिंपल भाषा में, मेडिकल टर्म यूपनिया है, सिंपल भाषा में हम इसको नॉर्मल ब्रीथिंग कहते हैं, साधारण सांस लेना छोड़ना। दूसरी टाइप ऑफ ब्रीथिंग है हाइपरनिया। इसमें इंटेंसिव ब्रीथिंग होती है, जैसे कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें हमारे शरीर की ताकत ज़्यादा लगे, तो उस समय हम ज़्यादा डीप ब्रीथिंग करेंगे, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपरनिया। थर्ड टाइप ऑफ ब्रीथिंग होती है डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग। डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग से मतलब है एब्डोमिनल ब्रीथिंग, या पेट में सांस लेना, या बेली ब्रीथिंग, जिसमें हम गहरी सांस हम अपने पूरे पेट में लेते हैं और उस सांस को हम छोड़ते हैं। गहरी सांस जब हम पेट में लेते हैं तो हम ज़्यादा गहरी सांस लेने के वजह से हमारी ऑक्सीजन इनटेक ज़्यादा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बेली ब्रीथिंग करके, एब्डोमिनल ब्रीथिंग करके हम ज़्यादा गहरी सांस ले सकते हैं। और जो फोर्थ ब्रीथिंग मेथड होता है वो है कोस्टल ब्रीथिंग, जिसको हम शैलो ब्रीथिंग भी कहते हैं, छोटी सांस, शॉर्ट ब्रीथ। तो इस तरीके से हमने देखा कि 4 टाइप्स की ब्रीथिंग होती है। अब इन ब्रीथिंग्स में नॉर्मल पर्सन के लिए बेनिफिशियल कौन सी ब्रीथिंग रहेगी, उसको हम समझने के लिए हम पहले ये जानना चाहेंगे, और ये जानने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर ब्रीथिंग रिलेटेड या रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो सबसे पहला जो रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड डिजीज है वो है ब्रोंकाइटिस। दूसरी बीमारी है निमोनिया। तीसरी बीमारी है अस्थमा। चौथी बीमारी है पल्मोनरी फाइब्रोसिस। ऐसी बहुत सी बीमारियां होती हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होती है और हमारे ब्रीथिंग को इफेक्ट करती है, सांस लेने की पद्धति को इफेक्ट करती है। अगर हम सांस अच्छे से नहीं ले पाएंगे, बीमारी होने के बावजूद हमारी सांस की प्रक्रिया अगर पूरी नहीं होगी, गहरी सांस नहीं ले पाएंगे, तो हमारी बीमारी और बिगड़ती है, हेल्थ कॉम्प्लिकेशन और बढ़ता है। तो हमें इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है, कई ऐसी फिजिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें हमारी बॉडी में एक्सरसाइज करते वक्त या हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उस वक्त हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस ज़्यादा लेनी पड़ती है, वो नेचुरल है, बट सांस लेने में दिक्कत होती है, वो प्रॉब्लम है। सो हमें इस तरह की कंडीशंस, इस तरह की हेल्थ सिचुएशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। इनको समझने के बाद अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी ब्रीथिंग है जो ह्यूमन इंडिविजुअल, हर इंसान के लिए, हर एज ग्रुप के ह्यूमंस के लिए ज़रूरी होती है और वो नेचुरल होती है। सो 2 तरह की ब्रीथिंग हमने अभी, 4 टाइप्स की ब्रीथिंग देखा, उसमें से हम 2 टाइप्स की ब्रीथिंग को डिस्कस करेंगे इन डिटेल और समझने की कोशिश करेंगे उन चारों में से ये 2 ही क्यों, और इन दोनों में से वो सबसे बेस्ट ब्रीथिंग सीक्रेट कौन सा है। सो दो वो मेथड और जो ब्रीथिंग टेक्निक है, पहला है
डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग और एब्डोमिनल ब्रीथिंग और बेली ब्रीथिंग। डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग ये वो प्रोसेस है जो कि किसी एक्सप्लेनेशन की इसको ज़रूरत नहीं है, इसे समझने की ज़रूरत है। जब भी बच्चा पैदा होता है, आप एक छोटे बच्चे को साँस लेते हुए जब आप देखेंगे, तो आप देखते हैं कि वो उसके साँस लेने में जब वो साँस लेता है, इन्हेल करता है, तो उसका पेट ऊँचा हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है और जब वो साँस छोड़ता है, तो उसका पेट कम हो जाता है। सो ये ब्रीथिंग टेक्निक जिसमें व्हेन वी इन्हेल हमारा स्टमक एक्सपैंड हो जाए एंड व्हेन वी एक्सहेल हमारा स्टमक रिड्यूस हो जाए। So the inhaling and exhaling process wherein while breathing stomach get expanded, or when we expand the stomach while inhaling, whereby the intake of more quantity of oxygen you can take in your body, and when we exhale the stomach comes back to the normal. So this type of breathing is called diaphragmatic breathing or abdominal breathing. So this is natural breathing. जो एक छोटा बच्चा, पैदा हुआ बच्चा अगर कर सकता है, इसका मतलब ये तरह की ब्रीथिंग टेक्निक नेचुरल है। कुदरत ने, प्रकृति ने इस तरह की ब्रीथिंग को दे करके हमें भेजा है। अगर हम इस तरह की ब्रीथिंग फॉलो करते हैं, तो वो हमारे लिए ना ही सिर्फ अच्छा शरीर देगी, अच्छा हेल्थ स्वास्थ्य देगी, हमारे सिस्टम में, हमारे बॉडी में एक स्फूर्ति, एक्टिव, डिजीज फ्री और एक हेल्दी सोल, हेल्दी बॉडी का आप अचीवर होंगे। तो इस तरह की चीज़ों को, इस प्रैक्टिस को, इस सीक्रेट को आपको समझना है कि ये ब्रीथिंग सीक्रेट जिसमें आप डीप इनहेल करें, स्टमक तक इनहेल करें और एक्सहेल करें। लंबी ब्रीथिंग, ज़्यादा गहरी ब्रीथिंग आपकी वो ब्रीथिंग सीक्रेट है जो आपको अच्छा हेल्थ देती है। और ना ही सिर्फ हेल्थ देती है, आपकी लॉन्जिविटी, आपकी लाइफ को भी लंबा करती है। स्वस्थ लाइफ, बीमार लाइफ नहीं, बीमार रहित ज़िंदगी। तो इस तरह की ज़िंदगी, इस तरह की ब्रीथिंग सीक्रेट से संभव है। अब अगर किसी को किसी तरीके की रेस्पिरेटरी संबंधी परेशानी है, तो उनको इस तरह की ब्रीथिंग करने में दिक्कत होती है। अगर वो इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम से परेशान हो, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो ये ब्रीथिंग नहीं कर सकते। अपनी बीमारी को हटाने के लिए अगर वो स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट लेते हैं, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना सिस्टमैटिक इलाज करते हैं, अपनी बीमारी को अगर वो दूर करते, शरीर से बीमारी को हटा के धीरे-धीरे आप इस प्रैक्टिस, इस ब्रीथिंग टेक्निक की तरफ आएँगे, आपकी बॉडी ना ही सिर्फ हील होगी, बल्कि आप अपनी लाइफ को, हेल्दी लाइफ को रिगेन कर पाएँगे। वो संभव है, मगर उसके लिए आपको सेल्फ मेडिकेशन, आधी-अधूरी जानकारी लेकर के अपने तरीके से इलाज करना बंद करना चाहिए और एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर से आप कंसल्ट करिए, अपनी प्रॉब्लम्स को एनालाइज़ करवाइए, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए, सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट करिए, उसके बाद में आप इस तरह की प्रैक्टिस को फ़ॉलो कर सकते हैं। अगर कोई बीमारी है, लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम अगर है, तो आप उसमें अगर इस तरह की टेक्निक्स को, ब्रीथिंग को यूज़ करना चाहेंगे, तो हो सकता है कि आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो उन कंडीशंस में एडवाइजेबल यही होता है कि आप अपने नज़दीकी, जिस कंट्री में भी आप रहते हैं, आप अपने कंसर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रॉपर एनालाइज़, एसेस और इन्वेस्टिगेट करवा के, प्रॉपर डायग्नोज़ करवा के आप अपना सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट प्लान करवाएँ और उस ट्रीटमेंट को लें। लेने के बाद में आप अपने सिस्टम, बॉडी के
एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से, रिस्पॉन्स के हिसाब से आप इस टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। और इन केस अगर आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स और अपने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज अगर आप मुझसे शेयर करना चाह रहे हैं और ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं टू रिगेन योर लाइफ बैक टू नॉर्मल, you can connect with me either through my channel or through my number. So, for a systematic, individualized, and tailor made treatment plans. So, what is the benefit of abdominal breathing or belly breathing? Number one, it strengthens your diaphragm. डायफ्राम हमारा वो एरिया होता है जिसमें एब्डोमिनल ऑर्गन्स को एक लेयर और एक शील्ड रहता है और एक पार्टीशन होता है फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन दोनों के बीच में एक लेयर होता है, डायफ्राम लेयर होता है। वो लेयर स्ट्रेंथन होती है। जब वो स्ट्रेंथन होती है तो हमारे बॉडी में जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे इनहेल करने की कैपेसिटी और बढ़ती है। So once the inhale is better, more oxygen intake is there, it will be beneficial for your body. So this is that beauty, the breathing secret, what is missing in our everybody's life. It is natural. Bring our system, bring our practice back to the normal. Now the second benefit what we can expect is when we do abdominal breathing, हमारा breathing rate it slows down. Breathing rate is, we have just seen, 18 to 30 breaths per minute is normal for every individual, healthy individual. If somebody who is having breathing rate deranged from this standard or ideal internationally accepted standard level, then we can confirm that person is having some breathing related health issues. So, in order to maintain the healthy breathing rate, if you practice this abdominal breathing, the breathing rate will reduce, which is good for your health. So, if you can maintain a healthy breathing rate between 18 to 30 breaths per minute, which is ideal, so that will be highly beneficial for your health. So, this is the second benefit. The third benefit of abdominal breathing will be oxygen demand of the body will reduce. If you inhale deep, you will inhale more quantity of oxygen. So the frequency and the requirement of oxygen of your body will reduce. So this is the beauty. See, the natural beauty of the system. The third step is oxygen demand will reduce. The fourth benefit what you can get is longevity of your life will increase. Your life, a healthy life, you will be living a long life, healthy life, disease free life. That is our everybody's interest. But we are missing something. If we understand that missing secret, it is not impossible. Everybody can regain their health back and a healthy life, a long life. The fifth benefit what we can get, what we can expect is this type of pattern, breathing secret, if we follow, the abdominal breathing will help you to reduce your heart related problem, BP, blood pressure related problem, either it is high blood pressure or low blood pressure. These type of problems can be reduced with a mere simple manipulating, coming to the nature, bringing it close to the natural process of breathing secret, we can achieve all these things. The last but not the least benefit what you can expect is the anxiety, stress,
worry, whatever you are having in your life, this type of abdominal breathing type of healthy practice can get you rid of so many problems which is problematic in itself. So if you practice this breathing things, breathing technique of abdominal breathing, diaphragmatic breathing, you can expect unbelievable benefits, healthy benefits. So these type of things we need to understand, and I will emphasize, because this breathing technique is natural, you don't need any artificial support. So let's come back, let's use this, practice it daily, pass this breathing techniques message to everybody in the family, every member, all age group people can follow this. It is not dependent on any medication. Your health is capable enough to self heal. Nature has blessed us so many options. We just need to understand and come close to nature, and absolutely the beauty, the essence of life, you will enjoy your life. That's the beauty of this breathing secret. Now we will try and understand another part also, because this is deep breathing, deep inhaling. The second part is shallow breathing. That breathing is coastal breathing. Now, the shallow breathing, deep breathing, there is no reason why you are doing deep breathing. Means it is a natural process. Whenever you are doing some physical activity, you do intensive breathing, that is okay. When you do activities, you feel that. But when you do shallow breathing, when you do short breath, it is a worry. Everybody is worried, everybody is concerned why you are taking short breath. So shallow breathing is a cause of concern. So let's understand what are the reasons that our body is doing shallow breathing. Number one, the reason for shallow breathing is because of some medication for some or the other health problem if we have taken in past. Because of the side effect of the medicines, you have ended up in shallow breathing. So that is one reason. Second reason what we can see is there is some health problems in your lungs, because that is the main organ where we inhale oxygen. Second is in brain, in muscles. When we have any type of health problem, infection, any health issues with these organs, these part of body, the breath will shorten or we take shallow breathing. The third, the reason for this is when we are anemic, anemia, when we have less blood in the body, खून की कमी, उससे भी हम हमारी सांस छोटी होती है. And the last point, and the very important point, anxiety, worry, stress. This also is one of the cause of short breath. Now we will try and understand the shallow breathing is because some of the internal organs is affected or some other problem, and the belly breathing and the diaphragmatic breathing is deep breathing. It's a natural breathing. So when we compare these two methods, the diaphragmatic breathing, the secret that we have to follow in the breathing of diaphragmatic breathing is the natural, effective, no side effect. Not only it will help you to get rid of disease,
it will be highly beneficial for giving you a longer life. Longevity will be more, a healthier body. So now we can understand and we can claim that diaphragmatic breathing is the breathing secret, which is natural and which means that must be practiced daily by every family member or every person of any age group in order to regain their health back and to live a long, healthy life, not diseased life. Diseased life, suffering, we don't want. We want health. So this is the natural process. We follow this. Now we will try to understand what are the methods how we can do a good breathing, healthy breathing, how we can maintain, how we can regain. The number one step is, if you have any type of health problem, any type of problem in your body, I always say, I have discussed, I have explained, number one step what we have to do is we have to detoxify our body. Very important primary step, and the first and the foremost step is detoxify your body, remove the toxins from the body. Number two step, prepare a drink, simple drink, which anybody can take in home. If anybody who is having any type of pain, arthritic pain, joint pain, any type of pain they are suffering for past years, or if they are having any pain sort of stuff, and those people, those who are diabetic, so few people, those who have some of the other problem, what we can do, there are few caution that too, if they follow those cautions, it will be beneficial for them. It will be recommended, highly recommended from my end, without taking anything, any self remedy. It is advisable that you get your health condition, health situation analyzed, assessed, diagnosed by experienced doctor at a designated hospital or a designated doctor's clinic. If you want, you can contact with me for your any of your health problems, because after proper assessment, analyzing of your health condition and body requirement, a treatment or any sort of therapies can be recommended which will be beneficial for you, or else it may give some side effects. It may be aggravating your some or the other problem which is not accepted, which is not the intention of any of the health information we pass or any doctors we share. So this is very important thing. And the drink what we have to take is, we have to take lukewarm water, गुनगुना पानी लेना है. एक ग्लास गुनगुने पानी में आप एक चौथाई, एक लेमन का चौथा हिस्सा आप उतना 200 ml या 250 ml ग्लास ऑफ वाटर में डाल लीजिए. उसमें 1 स्पून हनी मिला करके आप इसको रोज पी सकते हैं. हेल्दी इंडिविजुअल रोज पी सकते हैं. जिनको किसी तरीके का पेन और प्रॉब्लम है वो लेमन ना डालें, और अगर डायबिटिक है वो हनी का प्रयोग ना करें. तो इस तरह का कुछ कॉशंस का आप ध्यान रखते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करके आप करेंगे तो इट विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू. अदरवाइज इफ यू प्रैक्टिस दिस ड्रिंक, take it daily, it will not only help to detoxify your system, it will be very helpful in your respiratory system, breathing problem. It will give you healthy breathing. So this tip, if you use, it will be beneficial for you. The third method what we can use is, you can use black pepper, cinnamon, ginger, garlic. Everything is available in everybody's house across the globe. Every city, every
country, every human being in the globe, we are using this because these are very common, easily available. Every kitchen is having this, in every household we are having. We have to use this in our diet, in our routine practice. So this will be as a natural medicines which will have no side effect on your body. Now, next thing what we can practice, next method is avoid junk foods, processed foods, or foods that are not हेल्दी और म्यूकस फॉर्मिंग फूड्स जिससे म्यूकस बने, ऐसी चीज़ों को हमको अवॉइड करना चाहिए। अगर हम यूज़ करना भी चाहते हैं और करते भी हैं, मॉडरेशन में करें। एडवाइजेबल है कि आप अवॉइड करें, और अगर आप नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट मॉडरेशन में यूज़ करें ताकि आपको हेल्थ को ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े और आप अपनी लाइफ को हेल्दी बना सकें। नेक्स्ट मेथड व्हाट वी कैन फॉलो इज we can practice deep breathing exercise. Deep breathing exercise, it is not only beneficial for your deep breathing or healthy breathing, it is beneficial for your holistic healing. पूरे शरीर का संपूर्ण इलाज करने की क्षमता है। और डीप ब्रीथिंग करने से हमको ना ही सिर्फ हमारे शरीर में गहराई तक ऑक्सीजन जाती है, बल्कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और इम्यूनिटी बूस्ट होने से हमें हमारे शरीर में वो ताकत मिलेगी जिसके कारण हम हर तरीके के क्लाइमेटिक चेंज, हर तरीके की बीमारी वाले कंडीशंस में अपने शरीर को बिना किसी परेशानी, बिना किसी रोग से हम निकाल सकते हैं। अगर बीमार पड़ भी जाएं तो भी बीमारी आपको ज़्यादा परेशान नहीं करती। शरीर की इम्यूनिटी पावर में इतनी कैपेसिटी होती है, हमें उसको स्ट्रॉन्ग करना है, जो कि नेचुरली हो सकता है, वो हमें अपने प्रैक्टिस में ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट प्रैक्टिस व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक magnet therapy. Magnet therapy is highly effective for breathing or for your respiratory related problems or so many health problems. So it must be practiced with a experienced doctor. It should not be practiced self or by gaining little knowledge from some social media or some other platforms. So that will not be beneficial for you. And next method what we can feel which is beneficial is steam bath. Steam bath is also very effective for removing toxins from your body. Once the toxins are removed from your body, your deeper inhaling and the deep breathing will not be a constraint. The last and the very important method what we can plan for increasing the breathing is color therapy. Color therapy is also one of the best method. Blue color is very effective in relaxing, calming our mind and body. Once the body is calm, you can feel, you can inhale better. When you are in anxiety, when you are in stress, your breathing pattern you can observe it will be intensive, fast, and it will be shallow. So color therapy also plays very important role. And these type of methods, if we follow, these methods are very safe method, side effectless. There is no side effect, natural methods, and it can not only help you to regain health, but it will make you realize that your life, longevity of your healthy life is in your hands, and it is very much possible. If you have any type of breathing or health related problem, if you feel, if you have any type of problem, do not go for self medication or self treatment, because
If you have any problem in your breathing, in your lungs, in your system, and if you do this type of any type of self treatment, it can give you adverse side effects. So it is highly recommended that must consult expert specialist and a designated centers, hospitals, in order to get your disease diagnosed properly, analyzed properly, and accordingly the treatment will be planned based on your body requirement. For the same, you can feel free to connect me as well. किसी भी तरीके की परेशानी के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी परेशानी के हिसाब से प्रॉपरली एक सिस्टमैटिक एनालाइज करके जो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होगा, वो ट्रीटमेंट आपके लिए प्लान किया जाए, ताकि आपकी बॉडी को ना ही सिर्फ उस बीमारी से मुक्ति मिले, आपके आने वाले समय में, आने वाले ज़िंदगी में आप एक स्वस्थ और दीर्घ आयु, लंबी आयु की ज़िंदगी अपने परिवारजनों के साथ, अपने सदस्यों के साथ, अपने समाज के लोगों के साथ और अपने देश में आप जी सकें। आशा करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। आप किसी भी तरीके की कोई हेल्थ रिलेटेड जानकारी और कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो या ट्रीटमेंट लेना चाहते हो, तो आप मुझसे मेरे चैनल पे और या मेरे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके आने वाले भविष्य के दिनों के लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।